I was introduced to making music after I was introduced to electronic dance music, क्योंकि then I got to know कि एक digital audio workstation होता है जहाँ पे you can put in all the instruments and you can make a track all together. I openly say I love the attention I get on stage. People are like, we are there for the art, we are there for the money, we are there for music, but you are there for the attention too. When you're behind the console and you drop a track, you know what type of track does what to the audience. मतलब मैं इंस्टाग्राम से पहले अपना स्पॉटिफाई देखता हूँ, क्यों? क्योंकि स्पॉटिफाई की जो जनता है वो सिर्फ मेरे गाने सुनने के लिए आ रही है, वो मेरी रील देखने के लिए नहीं आ रही. वो गाने सुनेंगे तो मेरे संगीत बड़ा होगा. Hi Harsh, welcome to Radio City Freedom. Thank you so much for hosting me. Right. So let's talk about the phenomenal journey that you have had in the last 2 to 3 years, primarily, and that too within lockdowns and pandemics and every other thing coming your way. Let's just look back to where it all started. How did music start for you? Music was introduced to me when I was a 3-year or a 4-year-old kid, and वो birthday में gifts मिलते हैं, so I got a keyboard in a gift, and that was the most expensive gift I had that year. So that was very close to me, and that was the time I think I was introduced to music. Plus, my mom was very enthusiastic about making me a musician at a time, because she always had some dreams of being a musician herself, and she thought that I could take that stand and do something in that zone, I guess. So now when you have established yourself within the industry, looking back, do you think that gift that you got when you were 3 or 4 years old actually changed a lot of things for you in your life? Of course it did, because if it wouldn't have been, then I wouldn't have been here, I feel like. Because a journey is not a thing that starts 6 months or a year ago, or it's not something that it starts when you start going to a piano class or you start going to a production class. It starts when you start feeling for music, when music becomes a part of your life, and that happened to me long time back. Okay, so you got your first musical instrument when you were very, very young. Did you at that point of time take it up seriously, as in okay, every day I'll have to practice or anything of that sort? Music was going good up till my class 10th annual days. So it's a very funny incident, and I've never told this, and it's quite funny also. So that was like, I was in class 10th, and annual day, it's the most hyped thing in your school, and the guy who's performing in annual day is the hero of the school and everything, and he gets the lots of attention, everything. So a band was playing, and the vocalist of the band fell sick somehow. सो मैं ऐसे गिटार विटार बजाता था, कुछ शेडी सा बच्चा था मैं, ऐसे कोने में बैठ के, वो ब्लैक नेल पेंट्स एंड एवरीथिंग. आई यूज्ड टू बी मेटल हेड एंड मेटालिका, लिंकन पार्क सॉर्ट ऑफ थिंग. सो दे सेड तू गा ले, एंड ऐसा ठीक है यार गा लेता हूँ, गाना क्या है? सो दे सेड एनरिके का हीरो गाना है, एंड दैट वाज द मोस्ट हाइप ट्रैक एट दैट टाइम. एंड एनरिके's हीरो बैक इन लाइक अर्ली 20s वाज लाइक कि चॉकलेटी बॉय तो बनी क्या उसे दिन लड़का जिस दिन उसने कर लिया. तो इन अ वीक आई सैंग दैट ट्रैक, एंड उसके बाद मैं बहुत ज्यादा फेमस हो गया अपने स्कूल में. मतलब आई नेवर फेल्ट शॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स. ऑल द गर्ल्स यूज्ड टू बी लाइक, ये अच्छा लड़का है, इसको हीरो का नाम है एनरिके का. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई थॉट कि ये कुछ चीज बहुत बढ़िया यार. द काइंड ऑफ अटेंशन एंड द फीलिंग ऑफ बीइंग ऑन स्टेज, एंड ऑल द आईबॉल्स ऑन यू, हाउ इट अट्रैक्टेड मी. दैट वाज द डे दैट आई रियली थॉट कि अब ये नहीं छोड़ना है, मतलब ये रोज करना है. सो इट वाज सिंस देन दैट आई हैव नेवर लेफ्ट दिस थिंग. तो मतलब वो जो परफॉर्मेंस था, प्रैक्टिकली योर फर्स्ट परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस, वो जो फीलिंग ऑफ बीइंग ऑन स्टेज एंड ग्रैबिंग आईबॉल्स, जो अटेंशन आपको मिलता था, ये जो आपका जो कीड़ा है, आई मीन इवन द प्रोफेशनल कीड़ा स्टार्टेड फ्रॉम देयर. ऑफ कोर्स, क्योंकि लोग बोलते तो है लाइक पीपल नेवर ओ इट लाइक कि आई ओपनली से आई लव द अटेंशन आई गेट ऑन स्टेज. People like, we are there for the art, we are there for the money, we are there for music, but you are there for the attention too. That is one thing that can, you can never miss out. So वो feeling ही बहुत अलग थी. Like I was just a kid, and no one used to give me that much attention before that day. And since that day, everything changed. And I was like, this power that we have, this is the power of stage and music combined, I guess. So भाई अब जिंदगी में करना तो यही करना है. Till then, till say about your first live performance, did you have any inspirations? Because you said that you were into that goth metal head kind of thing.
Totally, madly, deeply. I still remember मैंने बाल बढ़ाना चालू कर दिए थे because Metallica was touring in India back in 2007 and 2008, and then I came to know कि minimum age तो 16 है. Then I was finding resources to get my ID card date of birth changed somehow कि मैं वो वाला show attend कर पाऊँ. So yeah, of course, like my early influences were Linkin Park and Green Day for sure, because that was one thing that was very groovy at that time. Eminem, Metallica, Led Zeppelin, Black Sabbath, like all the metal bands, Nirvana, Kurt Cobain, huge fan. Right. So from there to taking up electronic music, again, it's a very funny story, I know. So Yeah. can you So help us out with that? yeah, it was back in 2007. अभी तक till 2007 मेरे लिए म्यूजिक होता था. 5 people, a guy playing a guitar, a guy playing a drum, someone singing it, someone playing a bass guitar. That was conceptually a music zone for me. कि भाई म्यूजिक तो ऐसे ही बच सकता है लाइफ. So it was in 2007. I went to a cousin of mine and he played me a set of Armin van Buuren. He is a very renowned artist. So एकदम से म्यूजिक बजता है and he comes up in white shirt, white jeans, and his hands are in the air, the proper Armin step, and the music starts playing. And I was so confused कि यार ना तो यहाँ पे ड्रमर है, ना यहाँ गिटारिस्ट है, ये अकेला बंदा खड़ा हुआ है और कुछ बजा रहा है और लोग पागल से हुए जा रहे हैं, मतलब इतने सारे लोग पागल हो रहे हैं. That was the first time I was intrigued into this thing of electronic dance music back in 2007. So in 2007 मैंने उस टाइम पे सारे EDM गाने सुने. Armin had dropped his album Mirage. टीएस2's क्लब लाइफ वाज बीइंग प्लेड, तो मैं रात को उठता था 4:30-5 बजे और मैं रेडियो पे वो क्लब लाइफ सुनता था टीएस2 का. सो वो दिस ट्रांजिशन फेज वाज वेरी क्विक एंड इट वाज वेरी इंट्रीगिंग फॉर मी एज एन आर्टिस्ट. मतलब यार एक ही बंदा सब कुछ कर सकता है, तो शायद वही बंदा बनते जिंदगी में. So before this, were you making music? Were you आई performing? या मतलब आई वाज वही जो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा वाले जो कॉर्ड्स याद कर रहे होते हैं बच्चे वो क्लासेस में वो सब चल रहा था लाइफ में, कि मतलब सी कॉर्ड, ए माइनर, मतलब म्यूजिक सीख रहा था फ्रॉम समवेयर और समवेयर. स्कूल में भी आई वाज देयर इन द म्यूजिक सोसाइटी, तो वो सब तो चल रहा था, बट आई वाज नॉट मेकिंग म्यूजिक, क्योंकि उससे पहले मेकिंग म्यूजिक मतलब म्यूजिक बनाना आता ही नहीं था. आई वाज इंट्रोड्यूस टू मेकिंग म्यूजिक आफ्टर आई वाज इंट्रोड्यूस टू इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक, क्योंकि देन आई गॉट टू नो कि एक डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन होता है जहाँ पे यू कैन पुट इन ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एंड यू कैन मेक अ ट्रैक ऑल टुगेदर. So that was the first time things started growing up in that side. तो from 2007 जब आपका first brush with electronic music हुआ, from there to making music, ये journey कैसा था, and why did you think that you will make music? Because आप तो बजा भी सकते हो ना. एक ये था कि one thing that was very intriguing at that time for me for EDM was that everything is played by one person. अगर मैं म्यूजिक बजा रहा होता तो मैं या तो गिटार बजा पाता, या मैं ड्रम्स बजा पाता, या मैं कीज बजा पाता. मैं वो एक वो सेंटर ऑफ वो नहीं होता कि जो सब कुछ कर रहा है. तो वो एक चीज थी यार, मुझे सब कुछ करना है, मतलब नॉलेज तो थी म्यूजिक की. एंड गुड थिंग अबाउट मी देन आल्सो वाज आई कुड विजनाइज म्यूजिक. मतलब मैं विजनाइज कर पाता उस टाइम पे भी. आई वाज राइटिंग ट्रैक्स, आई वाज काइंड ऑफ कंपोजिंग म्यूजिक. मतलब मैं वो ऑर्थोडॉक्स तरीके से कॉर्ड्स तो जब भी नहीं बजा रहा था. आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट कि यार ये कुछ अलग तरीके से भी हो सकता है. So when you started understanding or at least taking baby steps towards producing or making music, um, it was completely self-taught. Totally self-taught. Totally self-taught. So obviously the struggles were real. Matlab, every single step there was something or the other which were. How did you deal with that? Were you very eager to basically take this up as a profession? इसीलिए आपका वो zeal था, interest थी, या फिर it was basically I just need to learn this because I love it? I spoke to my family about this because one thing, if you're in India and if you want to do something in your life, family support is the biggest thing that you can have in your life. It can go positive also, it can go negative also, because we live in such society where music is not still not considered as a profession. तो मतलब मैंने बोल दिया था कि 11th-12th में कि भाई मेरे को म्यूजिक करना है. तो कहते ठीक है, फिर आगे. मैंने कहा मेरे को आगे भी म्यूजिक करना है. तो कहते ऐसे तो नहीं हो सकता जिंदगी में तुम्हें तो आईटी करनी है. मैंने कहा नहीं, मुझे म्यूजिक करना है. तो चला था ये 1 साल पूरा चैप्टर. बट 12th हुई उसके बाद दे वांटेड मी टू परस्यू इंजीनियरिंग. पता नहीं क्यों, मतलब उनको ऐसा क्यों लगा कि मैं बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाऊंगा लाइफ में. तो उनको लगा. तो मैंने कोशिश करी, मेहनत करी, फिर मैं हार गया. मैंने कहा मम्मी नहीं हो पाएगा, करने दो म्यूजिक. So, but I was very blessed, and I always say this: I was very blessed that I still have, and at that time also I had that type of family support कि मतलब मुझे कभी उन्होंने रोका नहीं. I said I don't want to
to college. I want to make music for 6-8 months and let's see how it goes. कॉलेज तो अगले साल भी चला जाऊंगा अगर इस साल कुछ संगीत में नहीं कर पाया तो. सो दे रियली हैड देयर फेथ ऑन मी एंड पूरा सपोर्ट किया उन्होंने मुझे. तो उन्होंने कहा क्या चाहिए, मैं कहा एक लैपटॉप दिला दो, दो स्पीकर दिला दो, थोड़ा सा करवा दो प्लीज. वो प्लीज हमेशा आता था सेंटेंस के एंड में. तो दे वर हम हम्बल इनफ टू अंडरस्टैंड 18 ईयर ओल्ड्स दिल की ख्वाहिशें. सो काफी सपोर्ट मिला तो ये चीज मैं कर पाया. अगर आई ऑल्सो थिंक कि अगर मेरे पास उस वो वाला फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव मेड इट हियर. Now, talk to us about your first gig. मतलब आप, I mean, did you want to be a live performer, or did you want to make your music and be a live performer of your music? A wise man once told me that कि अगर तुम बिना संगीत बनाए स्टेज पे जाओगे तो तुम वही कर रहे होगे जो एक गली में 99 लोग कर रहे हैं ऑलरेडी. मतलब हिज सिंपल लॉजिक वाज अगर तुम जाके मार्टिन गैरिक्स के गाने ही बजा रहे हो, वो सारे लोग भी वही कर रहे हैं और तुम मार्टिन गैरिक्स को फेमस कर रहे हो, उसमें तुम्हारा कुछ नाम नहीं हो रहा. सो ये दिस थिंग हिट मी रियली नाइसली एट दैट टाइम. तो उस टाइम पे पहले आई थॉट अबाउट मेकिंग म्यूजिक. मैंने बहुत सारे गाने बनाए. आई घोस्ट प्रोड्यूस फॉर लॉट ऑफ पीपल. मैंने काफी ऐसे लोगों के गाने बनाए कि मैं नाम नहीं बता सकता, ठीक है. वो गाने बिक गए, लेवल्स पे चले गए, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि माय म्यूजिक इज रीचिंग आउट टू प्लेसेस. तो संगीत पहली प्रायोरिटी थी, उसके बाद इट वाज लाइक शोज. Right. So talk to us about the first show. मैं ये anecdotals इसलिए बोल रहा हूँ because those make very nice stories. जो first gig आपका जो professional gig थी वो क्या था और कैसे आया? पहला गिग था it was Delhi Technical University, Delhi, DTU, the biggest fest in North India, and I was opening for Bass Jackers. So I used to have a friend of mine. His name was Tapish, and he was in good talks with the committees and the presidents and everything. So he called me up and he's like, यार एक शो आ रहा है. मैंने कहा ठीक है यार करते हैं, क्या प्रॉब्लम है. तो कहता भाई डीटीयू है. तो मैं आई तो वाज ब्लोन अवे. मतलब मैंने ऐसे कौन से कर्म कर दिए कि मैं डीटीयू वाला शो कर रहा हूँ. बट ही वाज लाइक तेरा कर्म यार कि तू मेरे को जानता है और तू मेरा दोस्त है तो मैं तेरी मदद करूंगा. तो आई वाज लाइक यार वेरी हैप्पी. सो इट वाज आल्सो अ ब्लेसिंग कि आई एंडेड अप प्लेइंग डीटीयू एंड इट हैड अ वेरी मेजर इम्पैक्ट. अ न्यूबी स्टार्टिंग अप विद हिज फर्स्ट किक एट डीटीयू. तो वो भी काफी एक ऐसा मोमेंट था लाइफ में दैट आल्सो चेंज थिंग्स. And that type of feeling, opening up for DJ mag artists, bass jackers, that too in front of 15-20,000 people. तो उस दिन भी ऐसा सा हो गया था कि यार ये क्या है, लोग ही नहीं दिख रहे हैं, मतलब इतने छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं. सो वो भी काफी इंट्रीगिंग पॉइंट था लाइफ में, यार अब तो यही करना है. Right. From then, do you think after you did your first professional gig, you got even more interested in understanding music better so that you can actually make better music? Yeah, man, because every time we play a track, हमें उसको response पता लगता है. When you're behind the console and you drop a track, you know what type of track does what to the audience. तो वो काफी इंट्रीगिंग हो जाता है. तो एक एक क्लियर ये भी हो जाता है कि ये वाला गाना ऐसे चलेगा, ये वाला गाने पे लोग नाचेंगे, ये वाला गाना लोग गाएंगे. तो आई कंटेम्पलेटेड दैट प्रोसेस इन माई स्टूडियो कि भाई 3 जॉनर के गाने बनाने हैं. एक में लोगों को नचाना है, एक में लोगों को रुलाना है, एक में लोगों को हंसाना है. तो इट गोज हैंड इन हैंड. मतलब मैं आंखें बंद करके म्यूजिक भी बना सकता हूँ. मतलब एवरी ट्रैक दैट आई पुट आउट हैज अ मोटिव टू इट. या तो वो गाना रात के 2 बजे सुनने के लिए बना होगा कि भाई मैं थक चुका हूँ, जिंदगी में चूर हो चुका हूँ, मेरे घर वाले मेरे को छोड़ दिया, मैं भाग चुका हूँ जिंदगी से, मेरे को गाना सुन के थोड़ा सुकून मिलेगा. या तो वो गाना होता है कि चलो मैं एक ड्राइव पे जा रहा हूँ, आई पुट ऑन द ट्रैक लाइक सितारा और मैं थोड़ा मोटिवेटेड फील करूंगा. या तो वो एक हिप हॉप जोन होता है कि जो लड़का सुन के मतलब थोड़ा चिल विल करेगा, लाइक शोर शराबा. या तो इट इज अ कम्प्लीटली केयर फ्री ट्रैक लाइक फलक. तो बिना मोटिव के गाने बनाना मेरे को नहीं लगता कि देयर इज अ पॉइंट, बिकॉज एवरी स्टोरी शुड हैज अ मीनिंग टू इट एंड एवरी स्टोरी शुड हैज अ मोटिव मेरे हिसाब से. Right. Okay. Now, from that DTU gig till today, अगर वो जर्नी आपका, आप खुद ही जब you look back and look at that journey, what are the 3 lessons that you think you have learned? फर्स्ट लेसन दैट आई ऑलवेज इज बी ओरिजिनल. मतलब भाई ओरिजिनलिटी होगा तभी यू विल स्टैंड आउट अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड. इफ देयर इज नो ओरिजिनलिटी तो फिर वही है, मतलब नहीं हो पाएगा लाइफ में. क्योंकि तुम यू विल कोट योरसेल्फ एज एक्स, देयर आर 10 अदर पीपल डूइंग द सेम थिंग फॉर x-10. तो वो कभी एक्स ग्रो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि ओरिजिनलिटी नहीं है. इफ देयर इज वन थिंग दैट ओनली यू कैन डू एंड नो वन एल्स कैन,
ओरिजिनलिटी, सेकंड इज कंसिस्टेंसी। ऐसे नहीं हो सकता तुम आज बहुत बड़े संगीतकार हो, तुम्हें लगता है आज तुम दुनिया का सारा संगीत बना दोगे, फिर तुम 6 महीने गायब हो गए। You can't do that, you know. You have to be consistent because music and the world changes every 6 months. Every 6 months a new genre is introduced and an old genre bones out. So you have to be very consistent about genres and what you are making, and you have to be very consistent about releases. You know, the audience that you are making, they should be and they have to be fed up with the music that you are making, because they are there for that, they are there for music. अगर मतलब मैं इंस्टाग्राम से पहले अपना स्पॉटिफाई देखता हूँ, क्यों? क्योंकि स्पॉटिफाई की जो जनता है वो सिर्फ मेरे गाने सुनने के लिए आ रही है, वो मेरी रील देखने के लिए नहीं आ रही। वो गाने सुनेंगे तो मेरे संगीत बड़ा होगा। सो इट इज ओरिजिनलिटी, कंसिस्टेंसी, एंड थर्ड थिंग इज हैविंग द राइट टीम एंड राइट पीपल अराउंड यू, नो नेगेटिव थॉट्स। मतलब अगर ये तीन चीजें तुम्हारे पास हैं, इफ यू हैव कंसिस्टेंसी, इफ यू हैव ओरिजिनलिटी एंड यू हैव राइट राइट पीपल अराउंड यू, ठीक है, सक्सेस मिल ही जाएगा। वो लेट मिले बाद में मिले, वो थोड़ा भगवान के हाथ में है, बट यू कैन नेवर गो रॉन्ग इन योर लाइफ, आई थिंक।